क्रिकेटर्स पाहिजे झालं का बॅट्समन आला ना तर दाखव बैट्समैन आ रहा है एक मैच इधर शाम को 7:30 बजे इधर Hello, good morning and welcome back to the Architects T20 Champions Trophy Season 11. We are now heading towards the Super 8 match number 3. 4D Penta Spark taking up with Zed Architects. So the news from the center, 4D Penta Spark won the toss, elected to strike first. It's a beautiful day out here and weather is hot and humid. Pitch condition looking good. Toss to win, elected to bat Vikrant, the captain of 4D Penta Spark. So we are all set to start the one of the exciting contest of the Architects T20 Champions Trophy Season 11. Now this is the match number 23 of the tournament and the third Super 8 match. So here we go, we are all set. Vinay Date on strike. Sachin will start the proceeding. Here we go, first ball. Oh, that's good bowling. Excellent line and length. And the first ball properly line and length by the bowler. Sachin went for dot ball. So I welcome all the viewers and spectators watching us live. Myself Nitya Solanki, I welcome you all. So Shahid Mistry on non-strike. Let's see, in the first 6 overs power play, only 2 fielders are allowed outside the circle. Here we go, second ball. Straight to the fielder, mid-on. Take some time to settle down there. So good pitch, great environment, and with the Sunday vibe, the double dhamaka today. We have the 2 matches coming up. One from this ground and one next at the afternoon from the Khalsa College ground. So I welcome all the platinum sponsors, gold sponsor and silver sponsors giving the valuable contribution throughout the tournament and also present to watch live exciting match. Straight to the fielder this time. Good stop. Now take a single done. Single taken.
So 1 was gone, 3 for no loss. A good start from Zed Architects. So I welcome all the sponsors, platinum sponsors, starting with MTM. We have Optima, Toli, MTCO Flooring, Workplace Interior Sharps. We have Steelcase. We have Rector. Gold sponsor, we have Dormakaba, North Billcraft, 100 Douglas Narsi. Silver sponsor, So Many Ceramics and Euronics. Pankaj Natar now will into the bowling attack, second over. So thank you to all the sponsors given the valuable contribution, and thank you for being present in the match. So 4 for no loss. A good start from Zed Architects. So talking about both the teams, Zed Architects, though they won only one match, still able to qualify this Super 8 round. Talking about 4D Penta Spark, the team was batting. 4 matches they played, 3 won and only one they lost. And only one they lost with Avengers by 7 wickets in the league match. Let's see, now it's time to perform something special, because this is not a ordinary league match, it's now the Super 8 match. Here we go, Pankaj. Defensively played, is not giving much room for the batter to hit, and this time well defensively played again by Vinay Date. So just 5 on the board, waiting for the first boundary. Once again the fuller length, looking to slice straight to the wicket keeper for no runs. So yet another dot ball from Pankaj Natar, just 2 runs of the 4 balls. First over, 3 runs conceded by Sachin. Oh, that was a quick charge, just one bounce for the fielder there. Oh, is it taken that? Oh, is he taken? No, it's not the catch. Just a quick reflex to stop the ball in the follow through. So 5 for no loss, last ball of the second over. Only 2 runs conceded. Good start from Pankaj also. This time change in bowling variation, slow release, send back. So good start from both the bowlers. After 2 overs, 4D Penta Spark, 5 for no loss. Sachin will continue here in second over.
Sachin will continue here, and the first ball went for 4. Waiting for that first boundary. Here we go. Shaheen Mistry has dispatched. You can see the action replay. Over the fielder mid-off. It's over the fielder at covers, and that will go for 4. Between wideish, long off, and deep extra cover. So the first boundary of the innings from 4D Penta Spark, 9 for no loss after 2.1. In comes Sachin. Once again a strike, well, straight down the ground. Is he got the distance? Yes. He got the distance for 6 runs. So they waited for the couple of overs to understand the bowling condition, the pitch condition, and now after understanding the proper line and length from the bowlers, and the attack mode has started. Went for 6. What a shot. Outside the park. Great strike. Once again flicked down nicely. There's no fielder standing at square leg. Yet another boundary from Shaheen Mistry. So what a start to the over. First ball went for 4, then for 6, then again a boundary. Here you can see the action replay. Nicely flicked. Excellent timing. So 19 for no loss with that boundary from Shaheen Mistry. So properly the openers, they understand, and now they are looking in good touch in the third over. This time defensively played and quick single taken. So big appeal to the square leg umpire, and they will look for one more run. Two runs total taken there, 1 with the overthrow. 21 for no loss after 2.4 4D Penta Spark. $21 for no loss. This is turning to a big over for 4D Penta Spark. Straight to the fielder this time at point. This time no runs taken. So starting with the 4, 6, 4, now 2 and 0. 16 of the over so far. Slice down that towards point, end of the over. So good comeback from Sachin. That last 2 balls went for dot. 3 gone there, 21 for no loss.
So 25 for no loss after 3.2. And that's gone for a big one. 6 run, the second 6 from Shaheen Mistry. Here you can see the action replay. Short pitch ball, waited for the ball to bounce and dispatch for a big one. That's over the roof top for 6. What a hit. Fantastic shot. Now this is a good start from 40 Penta Spark. The first 2 overs they waited, and now it's time to make some big score. At the first 6 overs will be the power play, and they will accelerate something special in the first 6 overs. So 32 for no loss. 33 now with that wide. Last ball of the 4th over. 4D Penta Spark. Pankaj to Vinay. So Vinay will take some time to settle down as he's giving more strike to Shaheen Mistry. He's looking good touch. He's batting 27 of 14 with 2 fours and 2 sixes. Yet another wide is trying to bowl this time the fuller length, but the ball just pitching outside the leg stump line. 34 for no loss. Quick single taken to end of the over. So 4 overs gone. They are 35 for no loss.
4 overs gone, 35 for no loss. So 35 for no loss after 4 overs. Now the captain, Pratik Niwati, into the bowling attack. Let's flick down nicely that toward deep backward square leg. And before they collect and throw the ball to the wicket keeper. Couple of runs taken. 37 for no loss. Architects T20 Championship Trophy Season 11 Super 8, match number 3 of Super 8, the third Super 8 match. We have seen yesterday the two Super 8 match. First was Malik Architects versus VK Legends, and second match was very unexpected. Avengers, they lost the first match of the tournament, and very well taken. Excellent catch taken there at covers. That's a first wicket fall. Looking for big one. Vinay was struggling from the start, but he was looking to play for big one over the fielder at point, and good catch taken there. So the first wicket fall of 4D Penta Spark, a good catch taken by Nitesh. So you can see the action replay here. Good catch taken, looking for big one. An excellent that effort by Nitesh. Here you can see the action replay once again. A bit of downward track, was looking to play, and good jumping effort. So 37 for 1 after 4.2, 4D Penta Spark. $37 for 1, Abhishek Shah, the new batter, coming at number 3. Defensively played, and so this was that wicket fell of the first wicket. Looking for a big one, and good catch by Nitesh at covers. This time went outside the leg stump for wide. So 38 on the board. They lost a 1 wicket, but still that attacker and destructive batter Shaheen Misri on non-strike is batting 27 of 14 with 2 fours and 2 sixes. Defensively played, good bowling. Pressure on the first. Here we see Shaheen Misri, 27 of 14, 4 fours and 2 sixes at the non-striker end.
starting with Vinay Date, lost very early. We had a good batting lineup coming up. Neeraj Kansara, Irfan Khan and Vikrant, the captain, is still yet to bat. Went outside the leg stump line. Went for wide once again. Umpire Mr. Azim Sheikh signalling that wide. Pratik Niwate, the skipper of Zed Architects. .39. Tossed up the relay, looking to flick straight to the fielder, standing at fine leg. Went for dot ball. So a successful over from the skipper Pratik Niwate. Just 4 runs conceded, 1 wicket taken. That was of Vinay Date. So 5 was gone, it's 39 for 1. .39 for 1 after 5 overs. Abhishek Shah will take time to settle down here. Last over now of the power play coming up. So 40 on the board, he lost 1 wicket. Let's see if they can get that more 10 runs. 40 for 1 after 5.1. That went for wide outside the leg stump line. With the wide, now the score 41. .3, 41 for 1, and this time is played Abhishek Shah. This will be the first boundary from his bat. That will go all the way for 4 runs.
You can see the action replay. Short pitch ball, wait it, and then hit for at a good strike there at fine leg region for 4. 45 for 1 after 5.4. The 2 balls left in the power play. So we're talking about that 50 runs. If you want to score some big target, you have to get that runs as you're playing the Super 8 contest, and that will be more challenging for the opposition. Went for dot ball, last ball of the 6th over. Nitesh, now the new bowler, is got promoted with the good catch taken. Good stop the fielder at long on to end of the over. So end of the over number 6, 46 for 1, 4D Penta Spark. Now the fielding restriction will be lifted. Maximum fielders can be go outside the circle. 4 fielders minimum should be inside the circle. .46 for 1, and that will go for 4, and with that boundary 50 up for 4D Penta Spark. Abhishek Shah got his second. That's flicked away nicely. Short of pitch length from Pratik Niwate. Now the captain once again. He's got the first wicket in his first over, considered 4 runs, and this time went for boundary first ball. So they got 50 runs in the 6 overs. Still, it is not enough because the team like Zed Architects, they have a good batting contender side. So it will be challenging play, as this is the Super 8 round in progress. 50 for 1 after 6.2. So lefty righty combination will burn some calories on the field for Zed Architects. It will trouble there. This time a fuller length and flicked away. Let's see if they can go back for 2. They're coming back for 2. No. Good fielding, good collect, and good call there to Shaheen. Deny for that run. 51 on the board. 7.85 is the current run rate. And this 2 pair, the partnership, they have to go something special now today, as the first wicket, which was on 37 after 4.2, 28 of 15 with 2 fours and 2 sixes. Shaheen Misri on strike. This time is gone for big one. It's in the air, chance, and he's taken that. It was gone many miles in the air, but finally long on fielder makes no mistake, and that's taken the catch at long on region. Wicket number 2nd fall of 4D Penta Spark, and this is a big blow. Good catch taken by Sachin there. He was looking good touch. 28 runs, 16 ball, 2 fours and 2 sixes. That the main wicket of Shaheen Misri, the opening batter who came with Vinay Date, departs. So 51 for 2 after 6.4, 4D Penta Spark.
So 6.5 now, 51 for 2. Saurabh now coming at number 4. Went for wide outside the off stump. So Pratik, the skipper, has taken that wicket. 2 wickets taken. So 7 was gone. They are 52 for 2. सात ओवर के बाद 53 पे 2। सभी का एक बार हार्दिक स्वागत। आर्किटेक्ट्स T20 चैंपियंस ट्रॉफी सुपर 8 मैच नंबर 3 है जारी। देखना होगा आज कौन सा टीम लग रहा है लाई भारी। फिलहाल दोनों टीम भारी लग रहे हैं क्योंकि ये संडे का दिन है और संडे फंडे कौन उड़ा देंगे किसके दंडे। 53 पे 2, 7.1 4D पेंटा स्पार्क। सौरभ अब नए बल्लेबाज और अभिषेक शाह के साथ, और अभिषेक शाह ने इसको अच्छे से प्रहार कर दिया है। डी बैक से कवर, सीमर करके बाहर, वाइड इश लॉन्ग ऑफ के बीच 4 रन के लिए। अब ऐसी कुछ आतिशबाजी और कुछ बड़े स्ट्रोक के लिए खेलना होगा क्योंकि आप एक बड़े मंच पर, और सुपर 8 मैच है ये। 4 रन
9 ओवर्स गॉन, 66 फॉर 2। 9 ओवर के बाद 66 पे 2। तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस धमाकेदार कॉन्टेस्ट में। आर्किटेक्ट्स T20 चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 11 और सुपर 8 मैच नंबर 3। अभिषेक शाह 21-20 गेंदों में 3 चौके, 9 ओवर 66 पे 2। इस बार उठा दिया है हवा में गेंद, लॉन्ग ऑन फील्डर, 1 बाउंस 2 बाउंस उनके हाथों में। थोड़ा और डिस्टेंस कवर करते तो ये हाथ में ज़रूर होता लॉन्ग ऑन फील्डर के। नितेश अपनी तीसरी ओवर करते हुए 67 पे 2। और इसको खेल दिया है बैकवर्ड रीजन में। ये गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ यहां पर स्कोर वाइड और 4 रन। 72 पे 2 मिलेंगे यहाँ पे 5 रन। ये आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले, बैकवर्ड रीजन में जाती हुई गेंद और कीपर ने किया वहाँ पे मिस और मिलेंगे 4। 72 पे 2 4D पेंटा स्पार्क। नीतीश अपनी कर रही है तीसरे ओवर और सचिन 2 ओवर 19, फिर पंकज 2 ओवर 16, प्रतीक को मिला विकेट 2 ओवर 10 पे 2, निखिल 1 ओवर 5 और नितेश कोई रन नहीं यहाँ पर। बहत्तर पे 2 यहाँ पर स्कोर। और यहाँ पर डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति 10 ओवर के बाद 74 पे 2 4D पेंटा स्पार्क। और समय है ड्रिंक्स ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। We know complex problems take more than one simple change. So, little by little, at Herman Miller, we're designing solutions that really add up.
In the 1990s, designers Bill Stumpf and Don Chadwick began designing something that fit more people than the average chair. Instead of using materials standard for the era, they worked with a frame of high-tech molded plastic and pellicle, a skin of woven fibers. This meant more performance with less material. But design can't stand still if the problems we're solving change. Currently, there are 86 million metric tons of plastic in the ocean. Every year, that number increases by 8 million. Meet our latest solution, Aeron, now made with ocean-bound plastic, which will divert 150 metric tons of plastic from the ocean every year by collecting, processing, and re-engineering this plastic waste. Little by little, we're making the best better for Earth. So hello and welcome back once again to the Architects T20 Championship Trophy Season 11 and Super 8 match number 3. This time good strike straight down to ground. Let's see. He's got the distance. That will go all the way. Wide-ish longer for 4 runs. Here you can see the action replay. Tossed up delivery down the track and dispatch. Good strike. Wide-ish long off for 4 runs. With that boundary, 79 for 2. Defensively played, a quick single taken. With that single now, 80 for 2 for the Penta Spark. $80 for 2. निखिल वराडकर आता बॉलिंग मार्गवरती आलेला आहे आणि यावेळी सुंदर फटका. 2 धावा इथे घेणार बॅटर. दोन धावा आणि आता स्कोर 82 रन आणि 2 गडी बाद 10 षटक
आणि या षटकाचा शेवटचा चेंडू आता. Fielder straight to the fielder at covers. 11 gone there, 82 for 2. 4D Penta Spark. 11 ओवर के बाद 82 पे 2. आर्किटेक्ट्स T20 चैंपियंस ट्रॉफी का ये मैच चल रहा है. सुपर 8 सारे लीग मैचेस हमने पिछले 1.5 महीने के वीकेंड से इस लीग में 10 टीम शामिल थी. अब 2 टीम हो गई है बाहर. और अब बॉलिंग में वापस कप्तान प्रतीक निवाते. और इस बार खेल दिया है, फील्डर मौजूद वहां पर. वो प्रॉपरली टप्पा करने के बाद जज नहीं कर पाए गेंद को और ये चली जाएगी 4 रन के लिए. ये आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले. अच्छा पिक किया उसको, अच्छा टाइम किया. लॉन्ग ऑन फील्डर मौजूद थे लेकिन टप्पा करने के बाद थोड़ा वहां पे कुछ टर्न बेन. लॉन्ग ऑन के फील्डर थोड़ी कंफ्यूज. $87 for 2. प्रतीक निवाते अपनी तीसरी ओवर करते हुए कप्तान. सौरभ स्ट्राइक पर है. बड़े शॉट मारने का प्रयास, कनेक्शन नहीं मिला इस बार. अच्छी बॉलिंग, लेफ्ट आर्म मीडियम प्रतीक निवाते. इस बार अच्छा पेस डिलीवरी किया, शॉर्ट ऑफ द लेंथ, और सौरभ को टाइमिंग नहीं मिला, नहीं तो ये गेंद चले जाती सीधे आर पार. 87 पे 2 है फिलहाल स्कोर. 7.57 के औसत से रन बन रहे हैं. 160 170 एक अच्छा चैलेंजिंग स्कोर होगा. कि 4D पेंटा स्पार्क की बॉलिंग अटैक भी बहुत स्ट्रांग है. सौरभ खुद पहले मैच के हीरो रहे हैं. पहला मैच उन्होंने खेला था उल्वे ग्राउंड में. 4D पेंटा स्पार्क 7 रन चाहिए थे, 2 विकेट बाकी थे और सौरभ ने दोनों विकेट ले लिए, वही बैक टू बैक, और इस मैच को जीत लिया. 88 पे 2, अब 11.4 स्कोर ऑफ 4D पेंटा स्पार्क. प्रतीक अभी और एक बार, इस बार अभिषेक शाह को 2.4. 15 पे 2. फील्डिंग में कुछ यहाँ पे बदलाव लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के लिए. और इस बार पिक किया अच्छे से, फील्डर मौजूद है, प्रयास किया वहां पर पंकज नसारे ने, लेकिन गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर. 1 बाउंस 4 रन के लिए. ये आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले. लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद थे वहां पर. डीप काउ कॉर्नर से फील्डर दौड़ के आए, उन्होंने अच्छी दौड़ लगाई और वहां पर जजमेंट नहीं कर पाए उस कैच को. तो ये एक बेहतरीन कैच हो सकता था. नितेश ने जो कैच पकड़ा था वो तो बहुत ही था. इससे भी ज़्यादा कैच ऑफ द मैच सबसे बेहतरीन ये हो सकता था. 4 रन मिलेंगे अभिषेक शाह को. 37 पे खेल रहे 29 गेंद. 11.5. 92 पे 2 इस ओवर की आखिरी गेंद. और एक बार पिक किया है बड़े शॉट मारने के लिए. इस बार अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वाइडिश लॉन्ग ऑन, और मिलेंगे 1 रन. 12 ओवर 93 पे 2.
12 ओवर 93 पे 2। नितेश अपनी चौथी ओवर करेंगे। उठा दिया है और ये आर पार सीधे तारामंडल में 6 रन के लिए। अभिषेक शाह छा गए, सबके दिलों में भा गए। बहुत ही अच्छी टाइमिंग के साथ इसको खेल दिया है सीधे बल्ले से। ये देखिए डाउन द ट्रैक। और जिंदगी में मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क बहुत ही जरूरी है। और ये फुटवर्क किया और बॉल को भेज दिया आउट ऑफ द नेटवर्क। 12.1 पे 2 4D पेंटा स्पार्क। आउट ऑफ द नेटवर्क बॉल को भेज दिया यहां पर। देखिए इतनी बढ़िया सिक्स मारी है कि सीधे दूसरे कंट्री में चले गई है, उस बॉल की तलाश में गए हैं। और एक बार आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले। अच्छी टाइमिंग के साथ खेला था उसको 6 रन के लिए। ये आप देख सकते हैं। नितेश बॉलिंग पे आए और अभिषेक शाह ने तोड़ी नाख्यो फोड़ी नाख्यो અને બોલનો ભુક્કો જ કરી નાખ્યો। બહુ સરસ ટાઈમિંગનું પ્રહાર 6 રન માટે। 12 ઓવર 1 બોલ પછી 99 રન અને 2 વિકેટ થી સ્કોર થયું છે 4D પેન્ટા સ્પાર્ક। અભિષેક શાહ સ્ટ્રાઇક પર છે અને બહુ સરસ બેટિંગ કરેલા છે। આજે ધૂમ ધડાકા છે અને સન્ડે ફંડે છે અને અભિષેક શાહની બેટિંગ બહુ સરસ ચાલે છે। 44-31 બોલમાં અને એ જ આતિશબાજી હવે આગળ જો પડશે 4D पेंटा स्पार्क अभिषेक शाह। और एक बार फुल टॉस गेंद इसको खेल दिया है। ये मिलेंगे 4 रन और एक प्रहार। अभिषेक शाह स्ट्राइक्स वंस अगेन। फुल टॉस बॉल डाउन द ट्रैक। तो हम वो कह रहे थे क्रिकेट में मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क। ये देखिए और एक फुटवर्क के साथ बॉल को भेज दिया आउट ऑफ नेटवर्क। अच्छे से पिक कर रहे हैं, अच्छे से स्ट्राइक कर रहे हैं। जोरदार प्रहार और एक बार स्ट्राइक रोटेट करेंगे अभिषेक शाह। अभी पहुंच गए हैं 49 पर 33 बॉल्स। सेवन 4 एंड 1 6। बड़ी अपील, यहां पर स्वीप करना चाहते थे उसको, लेकिन कोई रन नहीं। 104 पे 2। अभिषेक की बैटिंग के बाद अब सौरभ भी बोलेंगे कि मैं पीछे क्यों हटूं, मैं भी जुड़ जाता हूं आपके साथ इस धमाकेदार संडे डबल धमाका। इस बार इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर पंकज नतारे डीप एक्स्ट्रा कवर से दौड़ लगाई और बॉल कलेक्ट किया और थ्रो किया नितेश के पास। 12.5 105 पे 2 इस ओवर में। 64101 क्या बनेगा आगे का पिन कोड। सो तेजी के साथ 1 रन दौड़ 64101 के साथ ओवर की समाप्ति। 13 ओवर 106 पे 2 4D पेंटा स्पार्क। सो इस 1 रन के साथ अभिषेक शाह के 50 रन पूरे हुए। पचास 34 गेंद 7 चौके 1 6।
We know complex problems take more than one simple change. So, little by little, at Herman Miller, So back to back 2 wickets here, and ZZ Architects are back into the match. They taken the important wicket the previous of Abhishek Shah, and now the new batter just in just out. तो ये है क्रिकेट का खेल, अजब गजब खेल, इसको बदल दिया है और इनका बहुत अच्छा चल रहा है मेल. यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले, विकेट मिला और यहाँ पर तैयारी हुई जीत की दोनों की टीम. 13.2 106 पे 3. we know complex problems take more than one simple change. So, little by little, at Herman Miller, we're designing solutions that
14 gone. It's 108 for 4. Once again, welcome back all the viewers and spectators watching us live. The Super 8 match number 3 is on. Pankaj Natar. A bit of misfield. Well, let's see. They can go back for 2 runs or a single. And that's the one more wicket fall. Pankaj Natar. You can see the action replay. That's middle. That the stump has gone flying all over. The off stump gone. And that's the wicket number 4 down. Here for 40 Penta Spark. So first wicket for Pankaj Natar and 1-1-10 for 5 down now. Yeah, 40 Penta Spark. And that's one more clean bowled. What is this happening here? What is this happening here? Pankaj has something special. He's bowling his third over. And one more clean bowled. Back-to-back wickets of 40 Penta Spark. And that's a wicket number 6 down. Zed Architects now. Something magical, something special. This is the Sunday special. Here you can see the action replay. After pitching the ball went very much low and no chance for the batter to even defend that ball. Hit on the stumps and gone. What a bowling from Pankaj Natar. Previous was this was that first wicket in this over that went for clean bowled, and then the very next ball, that's once again that clean bowled. So he is on hat-trick now. This is absolutely tremendous effort and good bowling. A good line in length makes the magic. Wicket number 6 down for 40 Penta Spark. 1-1-10 for 6 after 14.3.
And this is the first hat trick of the tournament. What is happening? Absolutely fantastic, Pankaj Natar. Wow, what a performance. We will not forget this day. Remember the name Pankaj Natar. He is a man, the golden man today. Here you can see the action replay. Once again, big appeal, a big shot, and slow and steadily. The finger has been raised by the umpire. So that's the hat trick. And what a performance. So beautiful, so elegant. Just looking like wow, this was the first one. This was very fantastic day, and this was the second one. And then the two, after taking two clean bowled and one that LBW. So wicket number 7 down, and what a bowling from Pankaj Natar. The first hat trick of the tournament. 14.4, 110 for 7 down. Irfan Khan, the new batter. What a bowling this is from Zed Architects. Absolutely fantastic. So good captainship from Pratik Niwate, calling Pankaj Natar now into the bowling, as he kept the option this bowler to bowl after 16 overs. He's been brought back in the over number 15 and done the magic for the team. They got a hat trick. बहुत ही अच्छी प्रदर्शन पंकज नचारे. ये नाम अब नहीं भूलेंगे. पहले यहाँ पर गेंदबाज जिस इस टूर्नामेंट में हैट्रिक. 110 पे 7 वाइड बॉल के साथ 111 हो गया है. तो टॉस यहाँ पर जीता था 4D पेंटा स्पार्क ने. बैटिंग का निर्णय लिया था, और यहाँ पर अब टीम थोड़ी सी संकट में है. इस ग्रुप सुपर 8 मैच नंबर 3 और एक वाइड बॉल के साथ. पंकज अब विकेट लेने के बाद थोड़े अब रिलैक्स होना पड़ेगा, थोड़ा संयम में लाना पड़ेगा, और देखना होगा आगे किस प्रकार से बॉलिंग करेंगे. उनकी और एक और बची इसके बाद. क्या ये और विकेट्स लेंगे अपनी टीम के लिए? पंकज टू इरफान, और एक वाइड. 3 विकेट के साथ अब 3 वाइड. हैट्रिक लेने के बाद अब 3 वाइड के साथ स्कोर 113 पे 7 4D पेंटा स्पार्क. दो गेंद बची है इस ओवर की. पंकज टू इरफान. इस बार अच्छी लाइन एंड लेंथ और रक्षा रूप से खेला. इसको स्ट्रोक 1 रन मिलेगा. डीप में खिलाड़ी मौजूद कवर में. 114 पे 7. तो यहाँ पर एक सफल ओवर. मिडल ऑर्डर टीम को पूरी तरह से तहस महस कर दिया है पंकज नचारे ने. पंकज नचारे ने नचा दिया है 4D पेंटा स्पार्क के मिडल ऑर्डर को. 114 पे 7 विकेट नुकसान पर 4D पेंटा स्पार्क का स्कोर. इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे नीरज. स्ट्राइक पर है पंकज. और ये और एक विकेट. हम बात कर रहे थे कि और विकेट लेंगे, ये बस विकेट के लिए आए. आज प्रिपरेशन की है, लक का टैबलेट लिया है, अच्छी नेट प्रैक्टिस की है, और ये रिजल्ट आपके सामने है. पूरी तरह से तोडी नाक्यू फोडी नाक्यू आणि स्टम्प्स नो बुक्को कर नाक्यू. आणि अशा प्रकारे 4था विकेट. एक
अजून एक विकेट फॉल. 4D पेंटा स्पार्क आता पूर्ण संकट मध्ये. 8वां विकेट. 15 ओवर 114 पे 8. 4 विकेट एक ही ओवर में. क्या बात है, बेहतरीन और धमाकेदार. तो ये वो ओवर आप देख सकते हैं. और एक बार पहली ये विकेट गिरी थी जो क्लीन बोल्ड हुए थे. 4 विकेट लेने में कामयाब एक ही ओवर में. फिर उसके बाद ये दूसरा विकेट, ये भी क्लीन बोल्ड हो गए थे. टप्पा गिरने के बाद अंदर आती हुई गेंद. और ये वो दिन अभी भूलेंगे नहीं. ये हैट्रिक का पल. और उसके बाद कुछ गेंद वाइड जाने के बाद इस आखिरी गेंद में स्टम्प्स को पूरी तरह से तोड़ दिया है और सभी दिलों को जोड़ दिया है. 15 ओवर 114 पे 8. पंद्रह दशमलव दो 114 पे 8. मात्र 2 विकेट लेने हैं. और क्या जल्द से बैटिंग करेंगे जेड आर्किटेक्ट्स. ये विकेट स्विंग और मिस. बड़े शॉट मारने गए, टोटली बीट हो गए. इसको खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की तरफ बड़े हिट के लिए, लेकिन कनेक्शन नहीं मिला. डॉट बॉल के साथ स्कोर वही रहेगा 114 पे 8. सचिन बॉलिंग करने आए. रन लेना चाहते थे लेकिन नहीं रहेंगे रन. और डॉट बॉल के साथ स्कोर 114 पे 8. इस बार इनसाइड एज लगा है. अच्छी बॉलिंग कर रहे. क्या प्रेशर बना के रखा है जेड आर्किटेक्ट्स ने. एक बॉल इस ओवर की बची है. 114 पे 8. और इसको खेल दिया है चढ़ाई के साथ सीमा रेखा के बाहर. ये गई 4. अच्छा कनेक्ट किया है, अच्छा प्लेसमेंट किया है. और 4 रन के लिए. 4 रन के साथ ओवर की समाप्ति. 16 ओवर का खेल खत्म. 16 ओवर के बाद 118 पे 8.
और पंकज वापस आएंगे। कितना कॉन्फिडेंस है कप्तान में कि ये दोनों विकेट लेंगे, ये दोनों विकेट लेके ही मानेंगे। पंकज की आज तारीफ करनी होगी। ये हैट्रिक वाले बंदे हैं, इनका नाम इतिहास के पन्ने में एक नए अध्याय के साथ जुड़ गया है। आर्किटेक्ट्स के 118 पे 8। अब ये आए हैं 2 विकेट लेने के लिए आए हैं, रन देने के लिए नहीं आए हैं। अच्छी बॉलिंग की आज उन्होंने, बिल्कुल। और ये बॉलिंग के साथ लो स्कोरिंग गेम में कुछ ज़्यादा ड्रामा करेंगे। इस बार फुलर लेन ट्राई किया लेकिन गेंद चली जाएगी लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल मिलेंगे। पंकज नचारे, आपका संडे स्पेशल हो गया। अब पार्टी बाकी है संडे नाइट की। तो हम बात कर रहे थे संडे मंडे, और उड़ा देंगे सामने वाली टीम के डंडे, और डंडे उड़ा दिए पंकज ने। बड़ी अपील पर ये आउट नहीं। स्कोर रहेगा 119 पे 8। अब ये 5 गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद, सबकी निगाह इस बॉलर पर, सबकी निगाह इस मैच पर, और सबकी निगाह बस ये ओवर में 2 विकेट और। ये देखिए, ये देखिए, इनको पूरी तरह से नचा दिया है। अब कप्तान विक्रांत आए हैं, एक अच्छे बॉलर है, ओपनिंग बॉलर है विक्रांत। तो एक बॉलर कप्तान, आज इनको मौका है कि कुछ रन यहाँ पे बनाए, कुछ एक डिफेंडेबल स्कोर बनाए, ताकि जो दूसरी पारी खेलने आएंगे बॉलिंग पे कुछ वहां पर जादू ही कर सके। यहाँ पर तेजी के साथ 1 रन की दौड़, दूसरे रन के लिए जाएंगे, ओवर थ्रो वहां पर हुआ, एक के साथ एक फ्री दे दिया। तो अभी इस कप्तान के लिए अभी ऐसी सिचुएशन बहुत खराब हुई है, पर वो कहते हैं 1-1 रन तिनका जोड़े जा, जो भी मिला सो उड़े जा। जिंदगी चली जाए किसी के वास्ते, हम तो बस चले क्रिकेट के रास्ते। और इसको अच्छे से खेल दिया है, फ्लिक कर दिया है स्क्वायर की दिशा में, मिलेंगे 1 रन। तिनका जोड़ेंगे और रन्स बनाएंगे। अब दोनों बल्लेबाज 40 पेंटा स्पार्क के लिए। यही खूबसूरती है आज के क्रिकेट की, और वो खूबसूरती दिखाई आज बॉलिंग अटैक में जेड आर्किटेक्ट्स ने। और यही एक मिसाल आज पंकज नचारे, 25 नंबर जर्सी, कोई भूलेंगे नहीं, सारे आर्किटेक्ट्स याद रखेंगे इस दिन को। अब इस ओवर की 2 गेंद बची है। खेलना चाहते थे बड़ा शॉट, लेकिन कट करना चाहते थे। टप्पा कहने के बाद एक उछाल मिली और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक 122 पे 8, 17 ओवर की आखिरी गेंद, और इनकी स्पेल की आखिरी गेंद। क्या और एक विकेट लेंगे, फिर 5 विकेट हो जाएंगे। बेहतरीन स्पेल समाप्त। पंकज नचारे 4 ओवर 26 पे 4, और 17 ओवर के बाद 122 पे 8।
17.1 122 पे 8। अब सचिन, अच्छी फुल लेंथ डिलीवरी और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। तो आर्किटेक्ट्स T20 चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 11, ये सुपर 8 मैच नंबर 3, 2 सुपर 8 कल खालसा कॉलेज ग्राउंड में, आज ये तीसरा मैच और चौथा सुपर 8 अब आने वाला है, दूसरे मैदान में होगा खालसा कॉलेज ग्राउंड। इस मैच की अब बात करेंगे। शुरुआत में टॉस जीता था 4D पेंटा स्पार्क ने, बल्लेबाजी का निर्णय लिया था विक्रांत, पर शुरुआत तो अच्छी रही थी, बट जो विकेट्स पड़े हैं और स्पेशली पंकज नचारे ने तहस महस कर दिया 4D पेंटा स्पार्क की पूरी यूनिट को। अब आखिरी 2 विकेट बचे हैं, कुछ रन्स बनाएंगे, 140 150 कोशिश करेंगे इरफान खान और विक्रांत। 123 पे 8। और इसको खेल दिया है पॉइंट की दिशा में, 1 रन मिलेगा। आर्किटेक्ट्स T20 चैंपियंस ट्रॉफी, सारे यहाँ पर जितने 10 टीम मौजूद थे, 10 टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अब 10 टीम में से 2 टीम को जाना पड़ेगा बाहर और बाकी की 8 टीम्स इस जुड़ गई है सुपर 8 कॉन्टेस्ट में। एक 124 पे 8, 17.4 4D पेंटा स्पार्क। सचिन, स्ट्राइक पे कप्तान विक्रांत, डाउन टू ट्रैक, खेलना चाहते थे, टोटली बीट हो गए, कोई रन नहीं। 124 इस गेंद के बाद अब 2 ओवर और बचे हैं पहली पारी के। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, 18 ओवर 124 पे 9 4D पेंटा स्पार्क। यहाँ पे 1 रन, आखिरी गेंद में 1 रन। तो तो पिछले गेम में ये आउट हुए थे, ये आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले, और कॉट एंड बोल्ड आउट, सचिन ने कैच को लपक लिया है। तो विकेट नंबर 9 फॉल ऑफ 4D पेंटा स्पार्क, बस 1 विकेट लेना है जेड आर्किटेक्ट्स को। 18 और 124 पे 9। अब मात्र 1 विकेट दूर जेड आर्किटेक्ट्स, 18.1 124 पे 9 विकेट नुकसान पर निखिल वराडकर 3.1 15 रन और 2 विकेट। अब स्ट्राइक पे है इरफान खान।
और इसको खेल दिया है कवर्स के क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा। विकेट की पतन, ये आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले। शॉट मारने गए थे, उठाने गए थे और डायरेक्ट हिट और गॉन। सो कप्तान प्रतीक निवाती ने थ्रो किया और विकेट लिया है रनआउट के रूप में। सो 18.3, 125 पे 10 विकेट के नुकसान पर बैटिंग की अगर बात करेंगे। सर्वाधिक स्कोर अभिषेक शाह 50 रन, फिर शाहिन मिश्र ने अच्छी शुरुआत की थी 28। मिडिल ऑर्डर को जो डिस्टर्ब किया है वो है पंकज नचारे। बॉलिंग की अगर बात करें तो ये जो स्टार बॉलर है पंकज नचारे, 4 ओवर 26 पे 4, 2 विकेट। प्रतीक निवाते कप्तान 3 ओवर 20 पे 2, निखिल विराट को भी यहाँ पे 2 विकेट लिए और सचिन को मिला 1 विकेट। 22 एक्स्ट्रा, 18.3, 125 पे 10 और जेड आर्किटेक्ट्स को चाहिए 126 रन 20 ओवर में। छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे। आर्किटेक्ट्स T20 चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 11 मैच नंबर 3 ऑफ सुपर 8। We know complex problems take more than one simple change. So, little by little, at Herman Miller, we're designing solutions that really add up. In the 1990s, designers Bill Stumpf and Don Chadwick began designing something that fit more people than the average chair. Instead of using materials standard for the era, they worked with a frame of high-tech molded plastic and pellicle, a skin of woven fibers. This meant more performance with less material. But design can't stand still if the problems we're solving change. Currently, there are 86 million metric tons of plastic in the ocean. Every year, that number increases by 8 million. Meet our latest solution, Aeron, now made with ocean-bound plastic, which will divert 150 metric tons of plastic from the ocean every year by collecting, processing, and re-engineering this plastic waste. Little by little, we're making the best better for Earth.
original. Ractor, the proud sponsor of T20 SXI, welcomes all architects. Here's a bit about us. We add longevity to structures with industrial flooring solutions and tile and marble solutions, carrying forward an 11-year-old legacy built by IIT and IIM alumni. Reach out to us today. Ractor, global excellence, local expertise. We know complex problems take more than one simple change. So, little by little, at Herman Miller, we're designing solutions that really add up. In the 1990s, designers Bill Stumpf and Don Chadwick began designing something that fit more people than the average chair. Instead of using materials standard for the era, they worked with a frame of high-tech molded plastic and pellicle, a skin of woven fibers. This meant more performance with less material. But design can't stand still if the problems we're solving change. Currently, there are 86 million metric tons of plastic in the ocean. Every year, that number increases by 8 million. Meet our latest solution, Aeron, now made with ocean-bound plastic, which will divert 150 metric tons of plastic from the ocean every year by collecting, processing, and re-engineering this plastic waste. Little by little, we're making the best better for Earth. Hello and welcome back once again to the Architects T20 Champions Trophy Season 11 Super 8 match number 3. Now we are heading toward the second inning play, as the first inning what a performance from Zed Architects. 125, they made 40 Penta Spark,
And now 126 to win for Zed Architects. It's not a big target, it's a low scoring game, but still defendable. Let's see what 4D Penta Spark can do something special here. Mahesh Tiwari on strike, Pratik Nivate, the captain, will be on non-strike, and captain of 4D Penta Spark, Vikrant, will start the proceedings. So I welcome all the viewers and spectators watching us live. Myself, Mitra Solanki, I welcoming you all. So let's see what Vikrant can do something special. It's 126, still defendable score for 4D Penta Spark. So here we go, ready for the first ball of the second innings. Vikrant. It's outside edge and good stop. Looking to play the slice shot, and very good stop by the fielder. Short third man. Almost saved that boundary. And with the single run, the first of the mark, Mahesh Tiwari straight away. So 1 ball bowled, it's 1 for no loss. Zed Architects. Vikrant to Pratik. Defensively played. Oh, this time misfield. We'll get. Let's see. They're coming back for 2, and they will get 2. So with 2 runs, Pratik Nivate, the captain, also off the mark with the couple of runs. Vikrant, now captain to captain. Straight to the fielder. So what a good performance by Zed Architects. Five balls bowled is 3 for no loss. So good start from Vikrant, the first over. So last ball of the first over. Straight to the fielder. Good start from captain Vikrant. 1 over's gone, 3 for no loss.
3 for no loss. Now the score of Zed Architects. Neeraj Kansara is bowling his second over. Second over for the team of this second innings. Mahesh Tiwari on strike. That's taken the early wicket fall. Celebrating. Neeraj Kansara strikes. Wicket number first fall early. And that's the batsman departs very early. So after first over by Vikrant, now the second over. And here you can see the action replay. Looking for a big one straight to the fielder. And that's the first wicket of Zed Architects. 1.23 for 1. So good catch taken by Monish, the fielder standing at covers. Neeraj. Sachin, the new batter, coming at number 3. So what a good performance in the first innings by ZZ Architects into the bowling attack as a man Pankaj Natar, the wicket taker, the hat trick he has taken today. 4 wickets in 1 over. Now target of 126, and they're struggling in the first over, second over. Now they got a wicket. Neeraj. No runs so far, 4 balls bowled. 3 for 1 the score.
So what a cracking shot. That will go all the way for a big one for 6. Here you can see the action replay. So very well played, excellent timing, a big one. Dispatch for a long on. It's outside the park for 6. So that was a mighty hit for 6 by Pratik Niwate, the captain versus captain. The battle is on. Architects T20 Champions Trophy Season 11, and this is the Super 8. Match number 3 is on. Single taken. .4, 10 for 1. Vikrant to Sachin. This time a slow release, but went outside the off-stump line for wide. Change in bowling variation. So 10 for 1, 2.4. Vikrant to Sachin. That's good comeback this time. Last ball coming up of the third over. 11 for 1. Sachin and Pratik now having a chat. Once again going for the aerial route. Has not got the distance here. So single to end of the over. So 3 gone. They are 12 for 1. Three was gone. 12 for 1. That's gone. Fielder standing at third man for only a single. That's a good pace delivery and looking for big one. The ball went in the direction of the third man region directly. .13 for 1.
Neeraj Kansara has got that wicket in his first over. Now he's bowling his second over, only 1 run conceded. Thirteen for 1 after 3.1. Neeraj now to Pratik, the captain, on strike. Trying to bowl a fuller length this time, went directly to the wicket keeper. Looking to play for big one, has not got the proper connection to play that shot. Thirteen for 1. That's a good strike, very well played. Vikrant, the captain, standing at deep point for single. Thirteen for 1. Now the captain, Pratik Nivate. Tough chance for the wicketkeeper there. The fielder was standing at the slips. Great effort. Here you can see the action replay. Yes, it could be the good catch of the match if that could be taken. Disappointed with that. 3.4, 14 for 1. So that's end of the over number 4, 15 for 1, Zed Architects. So Vikrant again into the bowling attack. That's gone high in the air. Chance for the wicket. Catch it and taken. Taken the catch. Nishant at long off region, looking for a big one, and gone. So that's the wicket fall of Sachin. And 4.1, they are 15 for 2 now. Here you can see the action replay, looking for the big one. Has not got the proper connection, and long off fielder Nishant takes it. .115 for 2.
So 4.1, 15 for 2. Zed Architects chasing the target of 126. Nikhil Varadkar, the new man, coming at number 4. Vikrant. Straight off the mark with a single. So that was that catch taken by Nishant at long off. Looking for big one, looking for the big connection, and that's a wicket number second fall. Now the captain Vikrant, is good pressure build up to the Zed Architects here. (15 for 2). Let's see now what the action plan for Vikrant, the captain, is bowling. Has something special, and this time just a bounce. Slow release, extra bounce straight to the wicket keeper. He will try this something variation in this over and get more pressurize Zed Architects. And we've seen in many matches that's a slow scoring game having a much more drama. Looking to play across the line batter there. Maybe that's the reason the ball didn't came on the bat. स्कोर का पट्टी किधर गया? सो 5 ओवर के बाद 17 पे 2। सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है आर्किटेक्ट्स T20 चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 11 और मैच नंबर तीसरा सुपर 8 कॉन्टेस्ट है जारी। इस बार खेल दिया चटामी के साथ पॉइंट की दिशा में नीरज कंसारा बॉलिंग पर आए हैं। स्कोर 18 पे 2, 5.2 जेड आर्किटेक्ट्स 108 रन अब 88 गेंदों में। कुछ अलग करना होगा। पावर प्ले में जो शुरुआत अच्छी हुई है तो निखिल और प्रतीक निवाते कप्तान अब इनको
कुछ क्रीज पर अलग जलवा दिखाना होगा। और यहाँ पर मिलेंगे 1 रन। पाँच दशमलव 3 19 पे 2 नीरज टू प्रतीक और मिसफील्ड, और ये मिलेंगे 4। रोक नहीं पाए मिड ऑफ के फील्डर, और ये 4 रन के लिए। ये आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले। जिस 4 रन के साथ अब स्कोर में बढ़ोतरी 23 पे 2, 5.4 जेड आर्किटेक्ट्स। नीरज टू प्रतीक, यहाँ पर रन रेट की बात करें 4.06 के औसत से रन बन रहे हैं, जबकि 7 के औसत से रन बनाने हैं। पाँच दशमलव 5 23 पे 2। लास्ट बॉल इस छठे ओवर की, नीरज टू प्रतीक। 1 रन लेंगे, लेग बाय के रूप में रन आए। 6 ओवर के बाद 24 पे 2 जेड आर्किटेक्ट्स। We know complex problems take more than one simple change. So, little by little, at Herman Miller, we're designing solutions that really add up. In the 1990s, designers Bill Stumpf and Don Chadwick began designing something that fit more people than the average chair. Instead of using materials standard for the era, they worked with a frame of high-tech molded plastic and pellicle, a skin of woven fibers. This meant more performance with less material. But design can't stand still if the problems we're solving change. Currently, there are 86 million metric tons of plastic in the ocean. Every year, that number increases by 8 million. Meet our latest solution, Aeron, now made with ocean-bound plastic, which will divert 150 metric tons of plastic from the ocean every year by collecting, processing, and re-engineering. So hello and welcome back once again to the Architects T20 Championship Trophy Season 11, and this is Super 8 round in progress. Super 8 match number 3. 24 for 2 after 6. So once again, welcome back all the viewers and spectators watching us live. Myself Mitra Solanki, welcoming you all. It's a great tournament so far for all the Architects, and here 10 teams was fighting for the battle. Now the 8 teams will fight for the battle. Vikrant is bowling well today for the team, and Pratik Nivate now with
So Vikrant is bowling well. That's something magical he will do for the team. So we'll let you know the score with some technical issue is facing right now. That went for wide outside the off-stump line. So welcome back to again Architects T20 Championship Trophy Season 11. Super 8. This is match number 3. Facing some technical issue with the score, we'll let you know the score. After 7 overs, 28 for 2. The defensive player Pratik Nivate will stay on the crease. He will not take a risk now. As the target is not that big, they can recover later on. Important to save the wickets. 28 for 2 after 7.2. Once again, back to back good bowling from the left arm spin. Important to set up a partnership between this pair, and important for 40 Penta Spark to get some quick wickets. Abhishek Shah now into the bowling attack. (7.5) 28 for 2. Last ball of the
8th over coming up. And that will go all the way for 4 runs. So they will look for runs, but they will settle in the crease, they will stay calm, and they will make runs. 8 was gone, they are 32 for 2. You can see the action replay, a beautiful sweep shot there towards deep backward square leg for 4 runs. Eight was gone, it's 32 for 2, Zed Architects. So here we have the scorecard now on the screen. 8 was gone, 32 for 2. Saurabh on the new bowling attack from 40 Penta Spark. He'll get a comfortable 2 runs. $34 for 2 after 8.1. Saurabh to Nikhil. Looking to slice that towards backward point, straight to the fielder for no runs. So 92 runs in 70 balls. The equation is just 20 plus the difference. Still they can manage to take that recovery. It went wide outside the off-jump line. $35 for 2 on the board. Straight to the wicket keeper. So 35 for 2 after 8.3. Zed Architects. The fuller length looking for big one, straight to the fielder, straight to the wicket keeper there. $35 for 2 after 8.4. Play that towards, that will go all the way. Deep extra cover for 4 runs. It's a cracking boundary from Nikhil Varadkar here. You can see the action replay. Excellent timing, very well played, 4 runs. So last ball coming up of the 9th over, 39 for 2.
Straight to the fielder. Dot ball to end of the over. 9 gone, 39 for 2. Zed Architects. What a start with the over. Excellent shot. One bounce into the fence. Pratik Niwade, the captain, now is taking the charge. Here you can see the action replay. Flighted ball. And one bounce into the fence. The full toss, the tossed up delivery from Abhishek Jha. And that's the reason it's hit hard from Pratik Niwade for a cracking boundary at cow corner. 43 for 2 now, 83 to get from 65. It's a doable score for the Architects. There's the Architects. 43 for 2, 9.2. Abhishek Shah is bowling his second over. Now this is the job has been done. Just hit a boundary, then take a single, doubles, and you get that 7-8 runs per over. Can easily win this match. It's important to stay in the innings, and also important in the bowling attack. If they can do something magical bowling, they had to destroy the middle order. 44 for 2, that's 9.4. Zed Architects. Straight to the follow through Abhishek. Last ball of the 10th over. So 10 overs gone. They are 45 for 2. It's time. They are 46 for 2. That's wide. And last ball coming up now. That's a good strike, cracking strike, and that will go all the way. 4 runs of 50 up for Zed Architects. So 10 overs gone, they are 50 for 2. And now 10 overs left, 76 to get. And it's time for drinks break. We'll take a short break and come back soon. Yes, cameraman is just displaying a beautiful scene here from Fatima grounds. So we'll take a short break and come back. We know complex problems take more than one simple change. So, little by little, at Herman Miller, we're designing solutions that really add up.
In the 1990s, designers Bill Stumpf and Don Chadwick began designing something that fit more people than the average chair. Instead of using materials standard for the era, they worked with a frame of high-tech molded plastic and pellicle, a skin of woven fibers. This meant more performance with less material. But design can't stand still if the problems we're solving change. Currently, there are 86 million metric tons of plastic in the ocean. Every year, that number increases by 8 million. Meet our latest solution, Aeron, now made with ocean-bound plastic, which will divert 150 metric tons of plastic from the ocean every year by collecting, processing, and re-engineering this plastic waste. Little by little, we're making the best better for Earth. सो हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। 10 ओवर के बाद 50 पे 2, 10 ओवर का खेल बाकी और बहुत कुछ रन्स आना है बाकी। 76 रन चाहिए 60 गेंदों में और इस मैच को अब दोनों टीम एक रोमांचक मोड पर, कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी अब आने वाले कुछ 5 ओवर में पता चलेगा। निखिल वराडकर और प्रतीक निवाते, और ये अगर नॉन स्ट्राइक स्टंप पर हिट होती तो ये विकेट जरूर मिलता। सही टाइम से उसको स्टंप्स के ऊपर नहीं, और यहां पर मिलेंगे 1/22, 10.151 पे 2 जेड आर्किटेक्ट्स। 32 पे खेल रहे, 32 गेंदों में 4 चौके 1 6 प्रतीक। पैड को टकरा के गेंद जाएगी 4 रन के लिए। फील्डर ने यहां पर दौड़ लगाई उसको रोकने के लिए, अब तक बॉल ने इस रेस को जीत लिया है। 4 लेग बाय के साथ मिलेंगे रन्स। So with 4 leg buys 55 पे 2 Zed Architects। सौरभ टू प्रतीक, और इस बार खेल दिया हवा में लेकिन सेफ, और मिलेंगे यहां पर 1 रन। 1 रन के साथ 56 पे 2 Zed Architects।
बड़ी अपील यहाँ पर सौरभ द्वारा। 10.5 58 पे 2, 68 रन और 55 गेंद। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में करेंगे निखिल और प्रतीक। इस ओवर के आखिरी गेंद करेंगे सौरभ। दोनों टीम को यहाँ पर मौका है, पर एक विकेट कुछ लेने में कामयाब होंगे। 4D पेंटा स्पार्क देखना होगा। और ये खेल दिया है, हवाई यात्रा में भेज दिया है, देखना होगा डिस्टेंस पर कैरी करेंगे। विकेट की पतन, हम बात कर रहे थे उस विकेट की, और एक बड़ा झटका। कुछ अलग करना होगा फील्डिंग यूनिट पर। सौरभ ने कर दिया है कमाल। विकेट पड़ते ही बैट्समैन का हाल बेहाल। 11 ओवर के बाद 58 पे 3 विकेट नुकसान पर अब जेड आर्किटेक्ट्स। ये आप देख सकते हैं, एक्शन रिप्ले उठा दिया था, बहुत ही ऊपर चले गई गेंद और फील्डर मौजूद थे वहां पर। लॉन्ग ऑन पे, वाइडिश लॉन्ग ऑन, और उन्होंने अच्छे से लपक लिया उसको। सो गुड कैच टेकन बाय शाहीन मिस्त्री, जिन्हें आज बेहतरीन शुरुआत दी थी। 4D पेंटा स्पार्क में 28-16 गेंद, 2 चौके 2 सिक्स, और एक अब कैच लेने में कामयाब हुए। 11 और 58 पे 3। ग्यारह और 58 पे 3। मनोज रिका में अब नए बल्लेबाज कमिंग एट नंबर 5। 68 रन अब 9 ओवर में। निशांत गेंदबाज, नए गेंदबाज, बॉलिंग में परिवर्तन। फुल टॉस गेंद इसको खेल दिया है पॉइंट के रीजन में। गेंद जारी है पॉइंट के रीजन पर, फील्डर तैनात, 1 रन मिलेगा। 59 पे 3। निशांत को यहाँ पर अच्छा टर्न मिल रहा है, देखना होगा। कोशिश करेंगे 4D पेंटा स्पार्क कि इस ओवर में कुछ करेंगे कमाल, या आने वाले कुछ ओवर्स में। 2 अच्छे ओवर्स इस मैच का इक्वेशन पूरा बदल सकता है। और इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते हैं कीपर, और ये देखिए हम बात कर रहे थे, वो कमाल की कमाल कर दिया है। चौथे विकेट की पतन। निशांत, बॉलिंग में परिवर्तन विक्रांत द्वारा, और 1 विकेट मिला है। 11.4 अब 59 पे 4। जेड आर्किटेक्ट्स।
ये आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले। चौथे विकेट की पतन। 11.459 for 4। नए बल्लेबाज अब नितेश आए हैं छठे नंबर पर। इस बार कोई टर्न नहीं। ऑफ टर्म लाइन के बाहर वाइड के साथ 60 रन, 4 विकेट नुकसान पर। तो सफल ओवर समाप्त। निशान द्वारा 3 रन दिए 12 ओवर के बाद 61 पे 4। बारह ओवर के बाद 61 पे 4। अब बॉलिंग में और एक परिवर्तन। मोनिश अब बॉलिंग पर आए हैं। इस मैच को अब और इंटरेस्टिंग बना दिया है 4D पेंटा स्पार्क ने। 61 पे 4, 8 ओवर का खेल अब बचा है। 65 रन की जरूरत है। पहली गेंद वहां पे वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा ऑफ टर्म लाइन के बाहर। जेड आर्किटेक्ट्स 61 पे 4। इसको कट करना चाहते थे लेकिन टोटली बीट हो गए वहां पर नितेश। आर्किटेक्ट्स T20 चैंपियनशिप ट्रॉफी सीजन 11 ग्रुप के मैचेस सब खत्म हुए। अब सुपर 8 एफर्ट वहां पर रोकने के लिए 2 रन ले जाएंगे जरूर। 2 रन के साथ 64 पे 4, 12.2 जेड आर्किटेक्ट्स। अब इस मैच में 62 अब 45 गेंदों में एक बड़ा ओवर, और जब तक प्रतीक निभाते हैं कप्तान तब तक इस मैच में जान है। 12.364 फॉर 4 और ये लपक लिया है सेकेंड अटेम्प्ट में। बेहतरीन कैच, इंपॉर्टेंट विकेट लिया है, 5वां विकेट। और जैसे बॉलिंग परिवर्तन कर रहे हैं विकेट मिल रहा है। ये कुछ अलग सा जादू छा रहा है इस क्रिकेट मैदान में। 4D पेंटा स्पार्क 5वां विकेट लेने में कामयाब हुए। अब जेड आर्किटेक्ट्स
शॉर्ट कवर में फील्डर तैनात किया उसी के लिए, कैचिंग पोजीशन के लिए, और निशांत ने उसको लपक लिया है। 12.4, 64 पे 5। ये आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले। ये हो सकता है अब तक कैच ऑफ द मैच। गुड एफर्ट। दूसरे अटेम्प्ट में एक हाथ से लपक लिया, कैच छूट गई थी लेकिन वो कवर किया। 12.4, 64 पे 5। 62 रन चाहिए आने वाले 44 गेंदों में। नए बल्लेबाज ऑफ सिद्धेश राउत कमिंग एट नंबर 7। मोनिश टू सिद्धेश। बैकफुट में जाके रक्षात्मक रूप से खेला इसको, कोई रन नहीं। अभी इस मैच को बहुत ही टफ कर दिया है 4D पेंटा स्पार्क ने। अच्छे से इसको कट कर दिया है, गेंद जारी है बैकवर्ड रीजन में और वहां पर रोक नहीं पाएंगे। आउटफील्ड काफी तेज, ये मिलेंगे 4। सिद्धेश रावत ने एक अच्छे से कट कर दिया है और भेज दिया है इसको 4 रन के लिए बैकवर्ड रीजन। ये आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले। लेट कट, चीकी कट, 4 रन। 13 ओवर 68 पे 5। निशांत बॉलिंग पे आया है, मौका है। क्या ये कैच ड्रॉप्ड है? विक्रांत वहां पर बहुत ही अपने आप से, ये आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले। एक बड़ा मौका था, एक विकेट यहां पर अगर पड़ जाती तो संकट में हो जाते। तेरह दशमलव दो, 70 पे 5। जेड आर्किटेक्ट्स कैरी नहीं कर पाए लॉन्ग ऑफ के फील्डर। 56 रन और 40 गेंद। इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद 1 रन के साथ। पचपन रन 39 गेंदों में। इकहत्तर पे 5 यहाँ पे स्कोर, और हवा में लेकिन सेफ। थर्टी 54 रन्स, 72 पे 5, 13.5। जेड आर्किटेक्ट्स इस ओवर की आखिरी गेंद। कलाई का अच्छा इस्तेमाल किया है, फ्लिक कर दिया उसको स्क्वायर की दिशा में, और यहाँ पे 2 रन के लिए जाएंगे। चतुराई बैटिंग यहाँ पर प्रतीक निवाते कप्तान द्वारा। 14 ओवर 74 पे 5, 6 ओवर में चाहिए 52 रन।
14 ओवर के बाद 74 पे 5। 6 ओवर का खेल बचा है, 52 की जरूरत है। मोनिश को यहाँ पे लाया गया है। उनके पहले ओवर में उनको विकेट मिला था, 7 रन दिए। पर जब तक प्रतीक निभाते हैं तब तक कोई टेंशन नहीं जेड आर्किटेक्ट्स को। कप्तान संभाल के खेल रहे। आखिर में आने वाले अब 2 ओवर में वो जो रिकवरी है, अब जो डिफरेंस है 16 का, वो अब कवर करने की कोशिश करेंगे आने वाले 2 ओवर में। चौहत्तर पे 5। और ये देखिए, और एक विकेट की पतन, स्टंपिंग आउट। 74 पे 6। मोनिश ने कर दिया है कमाल, दूसरा विकेट लिया है। 4D पेंटा स्पार्क इस मैच में पूरी तरीके से अब तक वो होप है वो बरकरार रखी है, और प्रतीक निभाते जब तक क्रीज पर है। ये कुछ बहुत ही टफ और रोमांचक मैच, रोमांचक मोड पर। 74 पे 6 विकेट नुकसान पर 14.1। ये आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले। डाउन द ट्रैक खेलने गए थे और ये हो गए आउट। 14.1, 74 for 6th, 50 T 35, 52 runs in 35 balls. तो अभी इस मैच को 4D पेंटा स्पार्क या जेड आर्किटेक्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट और अहम इस ओवर में है, इस मैच में है कि प्रतीक निवाती की विकेट। ये विकेट अगर मिल गई तो एक जैकपॉट और 4D पेंटा स्पार्क के लिए। 2 रन के लिए जा रहे हैं, 2 रन लेंगे। 77 पे 6, 49 रन 32 गेंदों में जेड आर्किटेक्ट्स को। मोनिश ने यहाँ पे 2 विकेट लिए, 1.410 पे 2। विनायक बड़ी अपील यहां पर, और विकेट मिला है। 7वें विकेट की पतन, मोनिश को मिला तीसरा विकेट। संकट में अब जेड आर्किटेक्ट्स। 7वें विकेट की पतन, 14.5, 77 for 7। ये आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले।
सेलिब्रेशन, तैयारी जीत की है पूरी 40 पेंटा स्पार्क। 49 चाहिए 31 गेंदों में। छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे। We know complex problems take more than one simple change. So, little by little, at Herman Miller, we're designing solutions that really add up. In the 1990s, designers Bill Stumpf and Don Chadwick began designing something that fit more people than the average chair. Instead of using materials standard for the era, they worked with a frame of high-tech molded plastic and pellicle, a skin of woven fibers. This meant more वाइट बॉल के रूप में रन अप 78 पे 7। शैलेश, नए बल्लेबाज क्रीज पर मोनिश। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति 15 ओवर के बाद, और एक सफलता ओवर समाप्त। मोनिश 2 ओवर 11 पे 3, 15 ओवर 78 पे 7, 48 रन चाहिए 30 गेंदों में। So 15 gone, it's 78 for 7. What a match between these two big contenders is making a very much tough and interesting to watch. The rest 5 overs. 3 wickets to take for 40 Penta Spark. And the captain Pratik Niwate is still on the crease, so a sigh of relief there in the dugout of the Zed Architects still. Nishant now into the bowling attack. 48 runs in 30 balls. Here we go. We'll wait for the umpire's signal. That came from leg by. 1 run. $79 for 7. Now the score. 47 run, 29 balls. Nishant. A bit of in the air but safe. So 2 couple of good overs. 40 Penta Spark can make tough for the ZZ Architects to chase that 126 target. And 1 big over can make a comeback. And Pratik is very much cool and calm, standing at the non-striker end. That's well timed. Excellent picked up. That will go all the way. Slow and steady ball wins the race for 4 runs. Square leg region. Now this batting, what Shailesh and Pratik. Need some more couple of boundaries to get their equation closer. 43 now from 26. So every over to 2 boundaries is much essential. Once again that played towards the cover region for a single. $84 for 7, 15.5. Last ball of the 16th.
So dot ball to under the over. 16 gone, 84 for 7, 24 balls left and 42 to get. Sixteen gone, 84 for 7. Monish once again back into the attack. The every over wicket taker. 2 over 11 for 3. 16 overs, 84 for 7. That will go for wide outside the off-stump line. "42 runs. That went one more wide. Now 41 from 23. Now with the wide. 40 from 23. Monish to Shailesh. Is getting something. Is not getting the line and length correctly. 3 wides back to back. That's hat-tricks of wides. This time played towards square leg region. Coming back for second. One shot. So only a single run they will get. 88 for 7, 16.2. 38 runs in 22 balls. Pratik Nivate, the captain, is still on the crease. 38 of 40, 4 fours and 1 6. Big appeal and gone! This is the big blow! This is the wicket what they wanted. And Monish has taken that. The captain, Pratik Nivate or Shailesh. So that Shailesh got out, so Pratik is still there in the crease. And Shailesh LBW by Monish, 6 runs of 8 ball, 1 4, 16.3, 88 for 8. Pratik is still on the crease, so still the hope is on for the Zed Architects. Here you can see the action replay. The wicket number 8 fall. 16.3, 88 for 8. Tanveer, the new batter, coming at number 10 from Zed Architects. 38 from 21 balls. This is the scorecard of the first innings, that was of 40 Penta Spark.
Pankaj Natar, 4 over 26 4, the hat trick taker today. And okay, the batting scorecard now. Pratik Niwat is still on the crease. And rest all the batters 11 all in single figures. 18 extras, 16.3. It's 88 for 8 down. 2 wickets now. Monish has done a fantastic job. 2.3, 15 for 4. Tanvir on strike. That's defensively played for no runs straight to the fielder, standing at covers. 38 runs to get in 20 balls for Zed Architects. 20 balls left. Monish is bowling his third over. That went outside the leg stump for wide. Runs are getting the extras. 4 wides of the over. He got a wicket also here. 37 from 20. That went back foot and cut down, and single taken. Last ball of the 17th over. 90 for 8. 36 to get from 19. So it's almost at 12 runs every over here to score. Let's see. They are looking for Pratik Niwate's wicket. Change in some field settings from Monish. Architects T20 Champions Trophy is on Super 8 match number 3. Short, mid wicket, very much short. There's a fielder standing at square leg. So single to end of the over. 17 gone. They are 91 for 8. 35 to get from 18. We know complex problems take more than one simple change. So, little by little, at Herman Miller, we're designing solutions that really add up. In the 1990s, designers Bill Stumpf and Don Chadwick began designing something that fit more people than the average chair. Instead of using materials standard for the era, they worked with a frame of high-tech molded plastic and pellicle. Abhishek Shah now the new bowler. Oh, that will go all the way. This year to stop that boundaries if we want to win this match. And that will go for 4 byes. The batsman misses, keeper misses, and went for 4. (31 from 17). Now 31 from 16. Still the tough call. 17.3, 31 from 15 balls.
And here the important wicket taken here. The wicket number 9, and that's the skipper. Pratik Nivate departs. Stumped by Vinay. 39 run, 46 ball, 4 fours and 1 6. And finally they got a wicket. A big sigh of relief there for 4D Penta Spark on the field. Here you can see the action replay. That important wicket, and there was a bit of fumble for the wicket keeper, but he carried and he has taken the important wicket, and Abhishek Shah will celebrate. The whole team will celebrate. And just one wicket now remaining here, and still 31 to get from 13 for Zed Architects. 95 for 9 down. Abhishek to Yusuf. Tossed up delivery, dot ball to end of the over, successful over. 18 gone, 95 for 9, 31 from 12. And that's it. The job has been done for the 4D Penta Spark. And here the last wicket fall, 95. The total team departs. The spin magic has done a fantastic job here for 4D Penta Spark, and they clinched the victory from Zed Architects with 30 runs victory. So that's the end of the match of the Architects T20 Championship Trophy Season 11. Match number 3 of Super 8 comes to an end with a dramatic win for 4D Penta Spark with a good bowling attack. They win by 30 runs. So myself, Mithya Solanki, your commentator, signing off for this match. We'll see you in the next match coming up live from JFSC channel, and that will be live from Khalsa College ground.